Alright, so hey everyone, my name is Aniket and welcome back to my channel. In today's video, we are going to cover a very crucial topic, that is the total expenses one needs to incur while they are planning to come to Canada for studies or for work. And in this video, we are going to cover the facts and figures and all the mandatory expenses that everyone needs to bear while they are planning to come to Canada, be it after their 12th or be it after their bachelor's. So watch this video till end, and if you're new to this channel, do subscribe. And this video is gonna be very informative and crispy. No, I guess. Let's get started. So the first major expense that you need to bear just after your 12th और अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है तो बैचलर्स के बाद if you're coming to Canada, जो पहला एक्सपेंस है वो है your IELTS examination. IELTS का मतलब International English Language Testing System. It's basically an English proficiency exam which basically tests your ability in English. उसमें 4 सेक्शन होता है, listening, reading, writing, speaking. तो आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, दे सकते हैं, या फिर यू कैन टेक कोचिंग क्लासेस फॉर योर आइल्स एग्जामिनेशन. कोचिंग का जो खर्चा आता है वो है अराउंड 5,000 to 10,000 INR डिपेंडिंग ऑन हु इज प्रोवाइडिंग यू द ट्यूटरशिप और विच इंस्टीट्यूट यू आर गोइंग टू इन ऑर्डर टू टेक द मेंटरशिप राइट फॉर योर आइल्स. एंड द आइल्स एग्जामिनेशन itself cost you 14,000 INR. So we can say that the total package for IELTS preparation as well as examination will cost you around 20 to 22,000 INR depending on the various perspectives. It's the first expense that you need to bear just after your 12th or your bachelor's if you're planning to come to Canada. So now once you have received your IELTS mark sheet or grades, it's time that you apply to Canadian colleges or universities. अब apply करने का application fees लगता है. Mostly all the top-notch colleges and universities demands an application fee, but कुछ colleges and universities का application fee नहीं लगता. You can actually fill up their form and apply for free. So now the top-notch colleges they demand an application fee. Application fee का जो range होता है वो है around $75 to 150 Canadian dollars. And as obvious कि आप बस एक कॉलेज में अप्लाई नहीं करेंगे because that's too risky कि अगर आपका ऑफर लेटर नहीं आता है तो you'll be in loss. And आप बहुत ज्यादा कॉलेजेस में भी अप्लाई नहीं कर सकते because that would be a wastage of money and बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा. Only number is 2 to 3 colleges और यूनिवर्सिटी जिसमें आपको जाने का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा पैशन है. बस उन्हीं 2 से 3 कॉलेजेस में अप्लाई करिए एप्लीकेशन फी दे के. एंड ऑल्सो अ टिप टू दिस पॉइंट इज अप्लाई टू दोस कॉलेजेस जिसमें एप्लीकेशन फी नहीं लगता एज अ बैकअप प्लान. अगर आपका टॉप नॉच कॉलेजेस से ऑफर लेटर नहीं आता इन केस, देन आपको उन कॉलेजेस में एंटर करने का मौका मिल जाएगा इफ यू हैव द ऑफर लेटर फ्रॉम देम एंड उसमें एप्लीकेशन फी भी नहीं लग रहा है. तो अप्लाई टू दोस कॉलेजेस एज वेल व्हाइल यू अप्लाई टू द टॉप नॉच कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी जिसमें एप्लीकेशन फी लगता है. एंड द एक्सपेंस इज 10 से 15,000 10,000 to 15,000 INR का एक्सपेंस होगा if you're applying to 2 to 3 top-notch colleges or universities depending on their application fee. That's the second expense you need to bear after IELTS. Now that you have received your offer letter, it's time that you actually enroll in the desired college or the university you have applied for by paying the first year tuition fees. And it's also ruled by the embassy that if you don't pay the first year tuition fees, you're not going to get the visa to fly. So वो आपको देना ही है. And if you're applying to the good colleges like Sheridan College, Seneca College, Centennial College, Humber College, ये सारे कॉलेजेस कनाडा में अच्छे हैं, रैंक भी अच्छा है. तो इन कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर का ट्यूशन फीस वैरी करता है फ्रॉम 17,000 Canadian dollars to 20,000 Canadian dollars, which in Indian money is 10 to 12 lakh rupees. ये आपका बजट रखना होगा आपको if you want to get admission in these colleges. And simultaneously if you want to take admission in the universities like York University, McGill University, University of Toronto, University of British Columbia, तो इनका जो फीस स्ट्रक्चर है, ट्यूशन फीस है फर्स्ट ईयर का, वो वैरी करता है फ्रॉम 20,000 Canadian dollars to 30-35 Canadian dollars or even more in some cases depending on which university you're applying for. So आपको मान के चलना है कि 10 से 17-18 लाख का जो बजट है वो आपको रखना है in order to get admission into the colleges or university you have applied for. Now once your IELTS is done, you have applied to colleges and universities, your admission is also done. Now it's finally time that you pay your GIC amount. GIC के बारे में मैं डेप्थ में इस वीडियो में नहीं बताऊंगा. If you want a different video on that, do comment below. बस इतना बता दूं कि GIC एक फिक्स्ड अमाउंट होता है of 10,200 Canadian dollars, in Indian money 6.5 lakh rupees, जो आपको पे करना ही होगा. And that's a proof Canadian government wants from us कि अगर आपका बच्चा कनाडा में आकर पढ़ता है तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा सर्वाइव करने में because he is having that much amount. And जो अमाउंट वो अमाउंट आपको इंडिया में रहते हुए डिपॉजिट करना होगा इन अ कैनेडियन बैंक, जनरली स्कोशिया बैंक, उधर डिपॉजिट करके सर्टिफिकेट लेना होगा. दैट्स अ प्रूफ, नहीं तो आपको वीसा भी नहीं मिलेगा. एंड वंस यू लैंड देयर फिजिकली इन कनाडा तो आपको हर महीने उस अमाउंट से $670 विथड्रॉ करने का मौका मिलेगा in order to survive and pay off your daily expenses. All right. The fifth expense that you need to bear is your medical tests. आपको वीसा अप्लाई करने से पहले आपको अपना मेडिकल टेस्ट करवाना होगा फ्रॉम सम सिलेक्टिव क्लिनिक्स. कहीं पे जाके आप नहीं करवा सकते, आपको सिलेक्टिव लोकेशंस दिया जाएगा एंड उन्हीं में से आपको चूज करके आपको एक जगह में मेडिकल टेस्ट करवाना होगा. एंड द रिपोर्ट्स विल बी डायरेक्टली सबमिटेड बाय द क्लिनिक टू द एम्बेसी एंड वंस द रिपोर्ट्स गेट्स अप्रूव्ड
you can actually file your visa. So it's a mandatory expense you need to bear, and medical test के लिए आपको 5,000 to 10,000 Indian rupees खर्चा होगा, depending on which clinic you have applied for. So 5 से 10,000 का खर्चा इस step पे है, and it's mandatory, you can't skip it. Alright, so the next expense is your biometrics expense. Biometrics का जो खर्चा आता है वो generally 85 Canadian dollars, and it's compulsory to get your visa. You need to get your biometrics done. $85 मतलब 5,000 to 5,500 Indian rupees. तो वो आपको देना ही होगा, and it's expense you need to bear. Finally, when you're ready with all these documents, it's time that you file your visa through a consultant, and the visa application will cost you 14,000 to 15,000 INR. 14 से 15,000 का खर्चा आता है to file your visa. एंड मैं रिकमेंड करूंगा किसी कंसल्टेंट के बेसिस पे ही करिए. अगर कुछ एक्स्ट्रा 1,000-2,000 लगता है तो दे दीजिए उनको, बिकॉज कंसल्टेंट्स आर हैविंग अ गुड रीच ओवर द एम्बेसी. डू नॉट अप्लाई द वीसा योरसेल्फ, बिकॉज अगर आपको नहीं आता है वीसा खुद अप्लाई करने पर, इफ यू मिस्टेक सम स्टेप्स, देन आपको फिर से रीअप्लाई करना होगा, एंड अगेन यू टू पे दैट 14 to 15,000 visa application fee. Once you have filed your visa, now you need to wait for 60 to 90 days to actually receive your visa. And in that time you can actually shop. It's the fun part. अब शॉपिंग तो मैंने डीकैथलॉन से किया है. डीकैथलॉन में हर वो चीज मिल जाता है कनाडा में सर्वाइव करने के लिए इनिशियली, एंड आई विल रिकमेंड यू टू गो टू डीकैथलॉन एंड शॉप. एंड जो मैं एक बजट आपको बता दे रहा हूँ, 50,000 में ट्राई टू कंप्लीट एवरीथिंग दैट यू नीड इन शॉपिंग. एक्चुअली मेरा भी 50-55,000 में सारा कुछ कंप्लीट हो गया था. अगर आपको बहुत ज्यादा बजट लग रहा है 80-85,000, देन इट्स रियली टू मच. ट्राई टू कंप्लीट इट इन 50-55,000 और मैक्स 60,000. Once your shopping is done, now it's actually the time that you book your tickets and fly to Canada. So अब tickets का prices vary करता है 55,000 rupees to 1,10,000 rupees Canada का, depending on which flights you're booking. If you're booking in Air Canada, Air India थोड़ा costly होगा, and अगर आप SpiceJet, Vistara, Lufthansa ये सब में करवाते हैं तो थोड़ा कम हो सकता है. But I'll recommend you to go to Air Canada or Air India because उसमें एक extra luggage allowance होता है. So you can actually carry 3 luggages. तो आपका प्राइसेस बेसिकली 55,000 to 1,10,000 में वैरी करेगा, डिपेंडिंग ऑन कितना जल्दी आप बुक करवा रहे हैं टिकट्स एंड कौन से फ्लाइट्स में करवा रहे हैं. नाउ व्हेन यू हैव लैंडेड टू कनाडा एंड इफ यू आर नॉट वैक्सीनेटेड बिफोर हैंड, आपका कोविड टेस्ट होगा, एंड कोविड टेस्ट का रिपोर्ट जनरली 72 आवर्स बाद आता है. तो 3 दिन तक आपको एक गवर्नमेंट होटल में क्वारंटीन करना होगा, एंड 3 दिन का जो कॉस्ट आता है वो है $1,000. $1,900 to $1,100 का बजट आता है, जो कि इंडियन मनी में 60 to 75,000 रुपीज का एक बजट आपको देना होगा, एंड उसका 50% अमाउंट इंडिया से ही आपको पे करके जाना होगा, होटल्स बुक करके जाना होगा गवर्नमेंट होटल, ताकि you can land and show them that you have a booking in this government hotel and you can actually quarantine there. So it's a 60,000 rupees extra expense for this COVID thing which you need to pay. Now as you're not vaccinated, आपको गवर्नमेंट होटल में 3 दिन स्टे करने के बाद आपको एक कॉलेज एलोकेटेड होटल या फिर आपका यूनिवर्सिटी आपको एक होटल एलोकेट कर देगा. उस होटल में आपको पिक करके ड्रॉप कर दिया जाएगा बाय द यूनिवर्सिटी और द कॉलेज इटसेल्फ, एंड यू नीड टू कंप्लीट योर 14-day क्वारंटीन पीरियड इन दैट पर्टिकुलर होटल अगेन आफ्टर योर गवर्नमेंट स्टे इज ओवर. तो 14 डे का एक ऑफकोर्स एक्सपेंस आएगा, एंड दैट एक्सपेंस इज अराउंड $1,000 to $1,200 विच इन इंडियन मनी इज 70 to 80,000 रुपीज, जो आपको फिर से बियर करना होगा, एंड इट्स अ मैंडेटरी एक्सपेंस इफ यू आर नॉट वैक्सीनेटेड. हाँ, अगर आप वैक्सीनेशन ले लेते हैं देन आपको गवर्नमेंट स्टे नहीं करना होगा, एंड क्वारंटीन पीरियड भी आप स्किप कर सकते हैं. तो in that case that you're getting that advantage, but generally people are not vaccinated, so आपको ये दोनों expense bear करना होगा. Now you can actually see that I have given you all the step by step mandatory expenses in the screen, and मैंने आपको full amount भी calculate करके दे दिया है, जो आप सोच सकते हैं. You can take this as the brownie amount which you will be needing in the first year when you fly to Canada or you plan to fly to Canada and study. And I hope this video helps you. It's informative enough to give you all the insights and facts and figures you need to decide that how much amount is actually needed to study in Canada. So if you have found this video useful, do give it a thumbs up, and if you're new to this channel, do not forget to subscribe and press that bell icon to get notified whenever I post a new video. Till then, stay home, stay safe. Ta-da!